is our object-oriented programming. Technically, what we're discussing is classes today. Mostly, obviously, first of all, let's discuss the fundamentals of object-oriented programming. What do we actually mean by object-oriented programming? I hope you can see my screen. You can see my screen, right? Yes. Okay. So, OOPS basically means is that we can actually create objects. Now, what do I mean by that? They're basically major pillars of object-oriented programming, जिसमें inheritance, polymorphism, abstraction, encapsulation आती है. But most importantly, we have object and classes. Now, इसकी example मैं आपको ये देता हूँ, just to make it more clear. Let's say you're developing a game, and while developing a game, you will have lots of characters. Okay, but all those characters need to have is a blueprint, which means you need to define some specific properties of those characters. तो वो जो आपके सारे characters हैं basically वो object हैं, तो उनके लिए एक object की class बनाओगे. मतलब उन objects का कोई नाम होगा. Okay, they will have a gender, they might have an age, so and so. So you will obviously define all this within a class. Everything around you basically is an object. If you look at your phone. Your phone is an object. Okay, your phone basically has certain properties. Okay, some certain features. Okay, if you look at a car, car model को देख लेते हैं हम. Okay, so in fact, let me explain first this, then I can come to that. So कौन हो रहा था? Hold on. Let me escape once. Someone else joined in. Oh no, all of them. Okay, so fine. So if you look at this particular example, let me go back. So whenever you develop anything, it has to come through a blueprint. So if you look at a car, the car obviously is an object that will have its properties, which will obviously what make does it have, which model does it have, color, year, and price. These are the certain properties of that car. Any object you pick up, every object will have properties, obviously. And every object that you talk about, when you talk about a phone, it will have its properties and it will have its functions, which are methods based. A phone will have its own function. A car will have its own function. A car would start, every car would start, every car would drive, every car would park. Yes or no? And then events as well, on start, on park, on break. So we will first of all define is that we have to make as a class. Okay, और class बनाने का फायदा होगा कि let's say game की मैं बात कर रहा था, आप एक character define कर दोगे, बाद में you can define the instances of those characters. कि let's say the character 1 का नाम ये हो, character नाम age ये हो, gender ये हो, and 2 का नाम ये हो, age ये हो, gender ये हो, so on and so. मगर ultimately in the beginning, if you have defined a class of that character, it will be easy for you to implement it. Same way, every time you have objects, you can define classes of them, and then you can reuse them. I'll give you an example. First of all, मैं दूंगा Python में कि classes के बगैर किस तरह काम होता है, classes के साथ क्या फायदा आपको हो. Okay, so classes is actually object-oriented program. When you talk about object, this is what actually means. These are all objects. So we have to treat every entity as an object, and that's how we program it. Okay, this is why we call object-oriented programming. ठीक है, फिर इसके एग्जांपल मैं बाद में भी आ जाऊंगा आपके साथ. But first of all, we need to discuss is the main abstract of all this. So isme, when we talk about OOPS, we talk about the concept of objects and data. Okay, and every entity is actually treated as an object. So OOPS basically has 4 major components: abstraction, inheritance, polymorphism, and encapsulation. Let's look at these in just a summary version today. So principles of objects again will start from class, will start from object, okay, method, inheritance, polymorphism, data abstraction, encapsulation. ये सारी चीजें हमारी जो रह गई हमारे सिलेबस में P4 पे. So what are classes? Classes are defined on objects blueprint, description or definition. We can use the same class as blueprint for creating multiple different objects. A very good definition that I obviously got from the net. And I think so it defines very well. The class consists of variable methods. So it's just a blueprint. It will define, elaborate, explain that particular entity, object. ये कैसा होगा. बाद में उसके instance से बाद हम create कर सकते हैं. Okay? So don't look at the Python code. उसको हम बाद में discuss करते हैं. अभी मैं आपके साथ I'll discuss that. What's wrong with my mouse? Okay. So why is it stuck? मैं नहीं चलता हूँ. Stuck now. So we'll also talk about the init method. Init method basically built-in method होता है जो हम class में हमेशा use करेंगे. So init method is used to initialize. So in other words, init method जो हम use करेंगे will always be used to declare the blueprint I'm talking about. So how to define the blueprint of class? We use built-in init method for that. ठीक है. So बात हो गई classes की. एक phone है, phone basically class है. उसके अंदर there could be different kinds of phones. Okay, rotary phone, touch
phone, cellular phone. They could be different phone, but actually, a phone class will be just one class. Okay, right? Uh, then we will obviously talk about Python method and functions. You do know what a function is. हमने पहले discuss किया हुआ है नीचे वाला def my function, that's how we define a function. Pass means I don't have anything in the function, but I made a function, but I'm just passing over. I'm not doing anything. So functions are independent. Okay, functions का ताल्लुक basically नहीं होता किसी चीज के साथ. मगर जब हम method की बात करते हैं within classes, methods always belong to a class or an object. Within classes की बात हो रही है. So that's the difference between method and functions in classes. के methods जो होंगे, for example यहाँ मैंने क्या किया, मैंने class test बनाई है, मैंने def my method बनाया सर. So basically def my method जो है, this will have no uniqueness, no importance of its own individually. अगर एक क्लास के साथ होगा तो इसकी इंपॉर्टेंस है, वरना इसकी इंपॉर्टेंस नहीं होगी. ठीक है, some small things that we should obviously know about before start. Inheritance. Well, inheritance की भी हम आज तो नहीं बात करेंगे, maybe in January. Okay, maybe if I could give you one example of small child inheritance today, I'll try to do that today. तो मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं कोशिश करूंगा आज हो जाए, थोड़ा सा पार्ट, ज्यादा नहीं तो. Obviously, inheritance का मतलब ये है कि if you make a class and then you make another class, you would like the second class to inherit the properties of the first class. If you make a third class, you would like the properties of the first and the second class to be inherited to the third class. So yes, it's very much possible you can do that. Okay, we'll look at it, that how we can inherit. And obviously, I think so, you know, कि inheritance का फायदा बहुत होता है reusability में. You can आपको बार बार नहीं बनाना पड़ेगा. I think one of the major important feature of classes is inheritance. Inheritance के बगैर classes का कोई फायदा नहीं. ठीक है? Reusability का concept है. So we have different types of inheritance. We have single inheritance. आप यहाँ देख रहे होगे. Single inheritance में क्या हो रहा है? I have class B, which is obviously inheriting the properties of class A. We call it single level inheritance. Then we have a multi-level inheritance. Multi-level inheritance basically means is that class C is inheriting the property of B and B is inheriting the property of A. Why do we need to do so? We'll discuss. Okay. Then we have is hierarchical. In this case, I have class B and C, and both class B and C is actually there. Both of them are inheriting the property of class C. Hierarchical actually is one of the most important feature of classes, and I think so it's the most widely used as well. Because you would like to make multiple classes that would inherit properties from one single class. Are you with me, beta? I hope I'm not talking to myself. Yes, Zainab Sayed, Zainab Far. Can you hear me? Oh no, don't tell me I'm talking to myself. Okay, thank you. Okay, so multiple. Now multiple actually will be very interesting situation, और जैसे multiple भी बहुत ज्यादा यूज होता है. Multiple में ये होगा कि मेरे पास दो separate classes हैं, और I would like to make, ये यूज तो ऐप डेवलपमेंट में बहुत, you would like one app to have the features of multiple other classes. So class A and class B the properties will be shared with class. It's a very interesting topic by the way. So then what we have is, okay, anyway. So then we have is polymorphism. I think so polymorphism का अगर आपको dictionary मतलब पता है, so basically it means is that taking many forms. Okay, so a thing or an action is present in different forms. So again, it's a very important thing. आप एक ही चीज को आप different तरीकों से use कर सकते. You can use an object that has been created by you, and you can use it in different ways. Okay, not in the same way. So we'll look into it as well. कि polymorphism को use किस तरह जा सकता है, and how are classes used in polymorphism way. Encapsulation. Well, encapsulation is used to restrict access to methods and variables. The code and data are enclosed within a single unit. That's why it's known as encapsulation. Okay. From being modified by external agents. Well, we will be needing encapsulation in many places where I would not want my data to go out of boundaries. I would like it to remain within it. I don't want it to be assessed by every class. So this is what encapsulation actually data को private करना, not to be assessed by other structures within the programming. This happens to be with the help of encapsulation. Obviously, it's a very important feature security के लिए and all that. Inheritance की बात पहली हो गई है हमारी, ठीक है. Abstraction obviously जब हमने P2 start किया था, we talked about that. So some that information, okay, so allows us to hide and detail and expose only essential features of our concept. So whatever is needed, we will be needing that. Whatever is important for us, we'll be needing that. Okay, so this is what it is as far as your concepts are concerned. अब हम इसको directly programming में आते हैं, and let me explain you through program. So let's say सबसे पहले तो मैं आपको explain कर देता हूँ एक let's say हम यहाँ create कर देते हैं एक let's say a person, and I would say let's say the person is what
teacher. His name is, let's say, Saem. Is, let's say, whatever. Obviously, your numbers will not come in double quotes. Okay, and that's fine. So, and I can define over here is person one is equals to. Again, we will define over here is, let's say, is a doctor, and is let me make Mr. Bean doctor, and let's make him again 45. Right. So this is one way that I can actually define an object, and I can define the object's properties. And let's say over here is that I also define over here is male, right? And over here I have not defined it, for example. Let's see baat karo. Now, this particular case mein, this is, if I have to create multiple objects, this is not a very convenient way. The reason why it's not a very convenient way is because I can have different entities involved over here. एक पहले में मैंने लिस्ट में मैंने रे में मैंने 4 लिखे हैं, 10 की पहले में 3 लिखी हैं. If I want to assess the third one, okay, which is the third element, so I'll write over here is 2. And if I want, so पहले में अगर assess करूंगा उसमें कुछ होगा ही नहीं. तो this is the problem. If the number of items in a list differs, तो उससे भी मसला आएगा. So इसकी better approach होगी if we actually do it with a class. How do we define a class? इसको अभी अब देखते हैं क्लास को किस तरह बनाया जा सकता है. So for example, let me first create a class for you and then you get a better idea. So we can make class person. We have to put this colon always. We always have to define, obviously, is that why did it come? Def यहाँ होता है init method. So this is the init. Okay. Init के अंदर there are different things I have to define. I have to define, let's say, the name, comma, I'll define the age, right? And then I will say is self. I'll explain all this. Just let me complete the code. Is equals to name, then self dot age is equals to age, right? And so अभी मैंने क्या किया? अभी I just defined a class person, and by using the def init, I've actually defined a blueprint of this. मतलब ये कि मैं कह रहा हूँ कि कोई जो भी person होगा ना, that person will actually initialize and will have a name and the age. And I would say over here is the name will be assigned to the name and age will be age. Self actually means within it. Okay. So let's say now what we'll do is I will actually create an instance. So when I say P1, I'll person one में कहता हूँ, let's say is, so person is the class. इसके अंदर मैं define कर देता हूँ इधर. Let's say it's Saem, and I can say over here is comma 44, right? So अब ये automatically उसने खुद ही इसको पिक किया, मैंने टाइप नहीं किया. And actually I can't even delete this. ये automatically उसने pick कर लिया. उसने automatically इसको pick करके बता दिया कि actually okay, Saem, you're referring to the name and age you're referring to 44. So how good it is. Did you get the point? ठीक है ना? ये खुद ही ये मैंने टाइप नहीं की. तो ये इसको हम कहते हैं instance. So actually what we're doing is over here when we talk about actually with hashtag, sorry, creating an instance of the class. Okay. And over here हम बात कर लेंगे हमने क्या किया. सर यस बेटा. सर अगर आपने दोनों जगह कोई नंबर लिखा होता किधर? P1 में, हाँ तो फिर भी आपके नेम में नंबर आ जाएगा. नहीं, वो उसी ऑर्डर में उसको पिक करेगा ना, फिर नहीं आता. देखो सेल्फ का ये ब्लूप्रिंट का मतलब ये है कि आपने एक ब्लूप्रिंट डिफाइन कर दिया है. आपने बता दिया कि व्हेनेवर यू डिफाइन पर्सन के जो पैरामीटर्स होंगे, जो उसकी आप फील्ड्स कह दो, जो भी वो पहले नेम होगा फिर एज होगा. ये मैं डिफाइन कर रहा हूँ. इसलिए जब मैंने पर्सन लिखा है उसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया है. और उसके अंदर जब मैंने साइम लिखा उसको पता होगा फाइन दैट साइम एक्चुअली इज द नेम. ओके. तो वो अगर 44 लिखता उसने एज पिक कर लेना था, मगर उसके बाद एक बार 44 में लिखता. लेट मी ट्राई व्हाट यू आर सेइंग. ओके, आई डिडंट ट्राई दैट वे, बट ऑब्वियसली सो इफ आई से राइट पर्सन, व्हाट यू आर सेइंग इज इफ आई ऐड ओवर हियर इज व्हाट, लेट सर मी दोनों 44, right? And comma, let me type 44. So obviously, in that particular case, वो 44 को समझ रहा है, 44 could be the name. I mean, उसने उसको डबल कोट्स में डाल दिया. डबल कोट्स में क्यों डाला उसने उसको? Obviously, यहाँ उसने उसको कंसिडर किया ये नेम है, तो वो इसका इसी ब्लूप्रिंट को फॉलो करेगा ना. फॉर एग्जांपल अगर मैं डाल देता हूँ, let's say you could have is the, तो लाइक डेटा टाइप का कुछ नहीं है, नहीं उसमें बस ऑर्डर फॉलो करना. एग्जैक्टली. अब मैं जेंडर डिफाइन करता हूँ, या मैं कहता हूँ जेंडर, ठीक है. या अब मैं अगर कॉमा लिखूंगा, लेट्स से आवर टाइप इज मेल, सो उसने ऑटोमेटिकली, आपने नोट किया, उसको खुद पिक कर लिया. यस और नो? ओके. मैंने नहीं लिखा, उसने ऑटोमेटिकली खुद पिक कर लिया. सो वी हैड ओवर हियर फर्स्ट ऑफ ऑल दिस. सो आई वाज सेइंग वाज क्रिएटिंग a class. So this is the way I've created a class and this is the way we have created an instance. So इसको हम कहते हैं इंस्टेंस क्रिएट करना. मतलब मैंने डिफाइन किया P1,
P1 एक instance create. I could create multiple instances. Okay. And how do I display this instance? Well, simple. I'll say is print, and I'll say is P1 dot age. So if I want to get the age of P1, let's see how does it work. So let me run this. So it says for 44. क्योंकि वो मुझे बता रहा है कि P1 की age क्या है? It's telling me that it's 44, right? You see, this is how classes actually work. अगर ये मुझे list के through करना होता, it would have been more troubles. Okay. I can even define over here is P1 ka age, plus I could write over here is P1 dot name, right? Obviously, I could have add even space in between, so I'll have this 44. मतलब इसमें I can put a space as well, so I get this. So this is how actually classes work. I know आपको अभी पूरी समझ नहीं आएगी. Let me give you more examples of classes. फिर हम इसको further discuss करते हैं. Okay. Let me try to give you another example. थोड़ी सी lengthy देता हूँ. Well, not very lengthy, I would say is. Let's say I want to make is a class of brands. Okay. और यहाँ हम कह सकते हैं, let's say brand one हम कहते हैं is equals to, I don't know, like Enza. We can say okay is brand two is equals to, I don't know what. I'm gonna type it like Mr. Saem. Okay. Although I'm not a brand. So brand 3 is equals to, we can say over here is what. Okay, I can talk about like Mitsubishi, right? Wrong. अच्छा, हमने 3 brands declare कर दी, ठीक है? Okay. Then what we can do is actually let me create is बल्कि hold on. मैं इस एग्जांपल में सॉरी दोबारा आता हूँ. I should have given you. I'm so sorry. मैं इसके दोबारा अपने से बेहतर है कि पहले मैं आपको ना एक और चीज I did not discuss about the methods. शुक्र ज्यादा पीछे नहीं किया. एक काम करते हैं, मैंने डिफाइन किया नेम, एज और let's say gender. ये जेंडर मैंने क्रिएट कर दिया. इसके बाद हम काम करते हैं कि let's try to create is a property of this. तो मैंने इंस्टेंस भी क्रिएट कर दिया है, ठीक है. मेथड बेसिकली क्या होगा? मेथड वुड बी let's say person is actually speaking or walking, ठीक है. That would it be, ठीक है. तो what we can do over here is हम इधर define कर देते हैं, let's say इसके बाद मैं define कर देता हूँ. So I'm going to define over here is a method, और ये जो method क्या करेगा, I would simply say is print, and I would say is self dot name or plus let's say I would just simply say is walking, right? And then I would say I'll define another one. एक और method define कर देते हैं, def speak. Obviously the person will be speaking, and we will simply say over here is print, and we'll say let's say hello my, and we can simply say is plus or self dot name, ठीक है. तो ये बेसिकली मैंने क्या क्रिएट किया? I've actually created 2 methods. पहला मेथड क्या कर रहा है? सिंपली वो प्रिंट कर रहा है. Okay, self dot name, और self dot name obviously वो क्लास ब्लूप्रिंट्स उठा रहे हैं init से. Def dot speak is another method that I have created within the class. Okay. अब technically speaking ये जो method है ना, ये आउटपुट कोई नहीं देगा बिकॉज ये self dot name को ही यूज, ठीक है. इसके लिए तो अब हम सिंपली इसको आउटपुट दे सकते हैं हम. We can simply say over here is, let's say हम क्रिएट कर देते हैं, let's say Saem equals to person, और यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ Saem comma, ठीक है. और यहाँ मैं कह देता हूँ Saem dot speak, right? और यहाँ मैं कहता हूँ Saem dot walk, right? So actually this is what we have done. This way, let me just run this and see. And it missing one requirement, gender. I can just remove gender for now. And just let me remove this. So obviously space नहीं आई. Saem is walking. ठीक है, Saem is walking. यहाँ हो क्या रहा है? I wanted to explain was when actually you create a class, आपने क्लास क्रिएट कर दिया, आपने init मेथड में डिफाइन कर दिया नेम एंड यूज. देन व्हाट यू हैव ओवर हियर इज you define one method, फिर आपने एक और मेथड डिफाइन. सो व्हाट आई हैव डन ओवर हियर इज, मैंने यहाँ किया है, मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट किया Saem, तो मैंने उसको डिफाइन कर दिया. फिर मैंने आई हैव यूज्ड मेथड. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इज कि हम मेथड को किस तरह यूज कर सकते. मैंने सिंपल किया Saem dot speak. सो व्हेन आई से Saem dot speak, actually speak is doing what it's saying over here is Saem is hello my name is Saem, और फिर walk कह रहा है Saem is walking. So both methods are actually being executed and executing whatever is the definition of it. I hope you get the point. Yes or no? When classes obviously is one of the most I don't know, I will not say very complicated, but obviously it is a complicated part of P4. So this is the best way I can explain you. So ये आपके methods हैं, okay?
सो ये आपकी क्लास है. ओके, आई कैन गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल. तो मैं काम करता हूँ, मैं इंस्टेड लेट मी जस्ट शेयर दिस ओके ग्रुप में भी एज वेल, सो दैट आपने इसको भी प्रैक्टिस भी करना है. ठीक है, नाउ लेट मी कम टू द अदर एग्जांपल जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ. अच्छा, मैंने क्रिएट करना शुरू किया था बेसिकली वाज अगेन आई एम सॉरी अगेन लेट्स से क्लास गिव मी 5 minutes. Brand 2 equals to brand 1 is equals to brand 3. I'll not write this, but I'll just write over here is yeah, whatever. One is clothing, one could be Toyota, and third हम रख लेते हैं कोई भी और brand which deal with clothing, whatever. Then what we'll do is I'm just going to create class and I'll name it as is in brands to products class. ठीक है, इन्हीं की class create करते हैं and this would be let's say will be let's say third product 3 कम कर देते हैं. Rolex, I don't know like let's say Rolex is diamond brand, मुझे नहीं पता. Okay, and then एक और मैं क्रिएट करता हूँ. let's say I'll have class और इसके अंदर let me somehow take the opportunity and discuss about your inheritance. So brands comma I can have is products. मैं दोनों को इसके अंदर डिफाइन कर देता हूँ और यहाँ मैं कहता हूँ let's say popularity 1 को मैं कह देता हूँ इधर let's say this is equal to इसकी पॉपुलरिटी कर देते हैं 90. फिर हम पॉपुलरिटी 2 को डिफाइन कर देते हैं, इसको हम कह देते हैं let's say 89 and let's say we can have is popularity 3 और इसको हम डिफाइन कर देते हैं let's say well that should be the most actually but I know but nowadays it's not popular so I'll make it 70. Okay. Now मैं इसको कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. अच्छा, मैंने क्रिएट किया आइटम ब्रांड 1 तो कौन कह सकते हैं अगर हम मैंने आइटम रखा था, आइटम रखा था, ये आया नहीं, आइटम था 1. ठीक है, इसको प्लस कर देते हैं और यहाँ लिख देता हूँ मैं विद और प्लस कर देते हैं इधर और बाद में था आइटम और फिर क्या था डॉट खुद ही आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा कॉपी 1. ठीक है, so let's see what do I have. I hope there is no error. Oh, excellent. So what do we have here? मेरे पास आ रहा है Cambridge deals with shirt with popularity of 9. So this is a very good example of classes inheritance. मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंट क्लासेस बनाई है. इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट एग्जांपल. ये मैंने इनिशियलाइज में रही, मैंने सिंपल एक क्लास बनाई है विद द फॉलोइंग. ठीक है, ब्रांड क्लास बनाई है, उसमें ये डाल दिया मैंने. आई मेड अनदर क्लास प्रोडक्ट. ओके ओके, बट एक्चुअली ये जो क्लास प्रोडक्ट्स है ना, आपने देखा ये बेसिकली मैंने इसका आगे डाला बेसिकली ये इसका एक मैथड बन रहा है. ओके, मेड मैथड ऑफ सो इसमें ये डाल दिया मैंने. फिर मैंने क्लास बनाई पॉपुलर एंड यू माइट हैव सीन पॉपुलर में मैंने क्या किया है, पॉपुलर में मैंने ब्रांड और प्रोडक्ट्स दोनों को पिक कर रहा है. यू गेट माय पॉइंट बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन आई टॉक अबाउट पॉपुलर वो ब्रांड एंड प्रोडक्ट्स में से दोनों में से उठाएगा रहेगा, कुछ ब्रांड्स में से भी एंड प्रोडक्ट्स में से. सो इट्स इनहेरिटिंग this particular method. Actually this class is inheriting property of this and this is why जब हमने यहाँ लिखा है items dot brand तो लिखा आ गया आपका Cambridge deals with when we written item dot product 1 जब हमने लिखा है items okay item dot product 1 तो आपका क्या आ गया इधर product 1 में आपका आ गया शर्ट. और फिर जब हमने लिखा है इधर item dot popular 1 तो आपका बेसिकली क्या आ गया, पॉपुलर 1 में आपका आ गया 90. वो 90 इसलिए आया है क्योंकि उसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया उसके ब्रांड्स को. डिड यू गेट द पॉइंट? यस और नो? दैट वाज अनदर एग्जांपल. मगर जो पहली एग्जांपल दी है एग्जाम में ज्यादातर उसी को ही हमें डील करना होता है. मैं आपको कॉपी कर देता हूँ उसको भी. लेट्स लुक एट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए लेट मी जस्ट टॉक अबाउट मोर एग्जांपल्स लाइक हम क्या बात कर ले, कोई और एग्जांपल बात कर लेते हैं. एक सेकंड, क्या एग्जांपल दूं मैं आपको? अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ. मैं कहता हूँ कि क्रिएटिव व्हीकल क्लास मेरे को मैं लिख देता हूँ. ऐसी ऐसी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं आपके उधर P4 के एग्जाम में. The question basically says is let's create a vehicle class, let's say with let's say maximum speed. I'll record this. To create a vehicle class. Okay, sorry, but the spelling we have to create is a vehicle class with maximum speed and mileage instances attributes. Okay, so let's create one. So obviously we are going to create is a class by the name of now
Sorry. What is the right spelling of vehicle? Vehicle. What's wrong with me? It doesn't matter. I can name it as whatever I want. That doesn't make a difference. But still, obviously, I would like to just that's how it's spelled vehicle. Am I right? Yes. So I'm going to create a vehicle class. I am going to define over here the init. By the way, we also call it the constructor. We are going to define the constructor, and the constructor will actually have the question set over here. The maximum speed. Okay, so we'll have is max speed and was the mileage, right? So we'll obviously say is self dot max speed is equals to max speed and self dot mileage is equals to mileage. ठीक है, ये तो हमने क्लास टू डिफाइन कर दी. इसके बाद लेट्स से आई कुड से ओवर हियर इज कोई भी इंस्टेंट डिफाइन कर लेते हैं. वी कैन से ओवर हियर लेट्स से model x whatever is equals to the vehicle or instance define करने के लिए if I want to find the instance, so I'll define the maximum speed, let's say 240. Okay, and I'm going to define is the mileage, let's say it's doing 16. Okay, and that's a good thing about I like about this. वो खुद इसको अपन पे कर लेता है. And we can lately print it out. So we can print it. I can say is model x dot max speed, comma, we can say is model x dot mileage. Okay, so here we go. We simply run this and we get is this 240 and 16. So as per the question, as a question आपके पास makes directly आया हुआ है. Initial question: create a vehicle class with max speed and mileage instances attributes. Is that clear, beta? Let me copy this and place it here. और इसी के साथ let me also, because you are going to practice this right after. Okay, आपने अभी practice करना है इसको जिस लैब में हम करते हैं. Okay, don't make sure you do it right away. इसके बाद एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. Let's say I wanted to create yeah, I mean रेजन एक और क्वेश्चन भी आया था जो इसी साल आया हुआ था. तो क्या था, हाउ कैन आई फ्रेज इट. मैंने कहा था कि create a vehicle class. Okay, yes, create a vehicle class without any variables and methods. So अगर हमने ऐसे क्रिएट करना है, ओके, तो उसके लिए सिंपल हम ये करेंगे. we'll simply create class vehicle और यहाँ हम लिख देंगे pass. That's it. That's how we'll create it. So simple. Okay, that's how. ये पास पेपर का क्वेश्चन ही है, मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम. But obviously this was just for 2 marks. और class का मतलब obviously it has nothing. It is class has been created, but we don't actually have anything within it. Okay, then what we have is okay. Inherit की एग्जांपल एक और देता हूं मैं आपको.
Create a vehicle class bus that will inherit all of the variable and methods of the vehicle class. ठीक है? अच्छा, someone had a question, sorry. Yeah, thank you, Aishwarya. Okay, yeah. So create a child class that will inherit all the variables of the. But let me do it first. फिर मैं आपको explain करता हूँ कि हम किस तरह करेंगे. या मैंने सारा delete क्यों कर दिया है? I hope I can go back. Just one second. Init speed my village. ठीक है. बस IC को मैं use कर लेता हूँ दोबारा. Why should I delete it? So I can say over is class. I can define over is bus. Child class define कर दी. और हम define कर देंगे vehicle को. Okay, and obviously, but we don't need anything, so I'll just pass it. It is not supposed to do anything. मैं आपको explain करूंगा why. So school bus, let's say, is equals to your bus की class. देखो आपको automatic खुद pick कर रहा है. Bus की class को खुद pick कर रहा है. Bus and let's say school. इसका instance में define करता हूँ like वो की ज़रूरत है और इसकी कर लेते हैं 150 और इसको कर देते हैं हम 12. ठीक है. क्यों मैं माइलेज आ गई है. मैं 3 डिफाइन नहीं किए हुए. देयर ओनली 2, देयर नॉट 3 माइलेज आ गई. ठीक है. तो लेट्स से प्रिंट हम कर देते हैं और हम यहाँ क्या देते हैं लेट्स से नेम comma we can have school bus dot maximum speed and my maximum speed नहीं आया ना स्पीड लिखी थी. maximum speed 150 और माइलेज कर देते हैं 15. So bus school bus dot maximum speed. Okay, and we can say over here is comma mileage. हम define कर देते हैं इसकी which would be let's say what mileage. Vehicle speed 15 mile is this. अब इसमें explain करने मैं क्या चाह रहा हूँ. इसमें explain actually what I'm trying to do is क्या आपने note किया होगा हमने एक vehicle की class define किया है. Fine, no problem. Then we made just a class which basically doesn't hold much. This class is the bus class. और आपने note किया होगा इसके अंदर vehicle है. Which means this class actually has inherited the properties of the vehicle class. Okay, जो कुछ में होगा इसलिए आप नोट कर रहे होगे इधर when I've defined the instance. जब instance में define किया ना, instance होता है जब उसके parameter property define करते हो. जब मैंने instance define किया है इस instance के अंदर I've written bus. तो you might have noticed कि bus के अंदर automatically उसने maximum speed and mileage को उसने pick कर लिया because I defined vehicle and vehicle के अंदर we had defined this. So since we have defined bus, okay, and bus के अंदर vehicle है तो automatically the properties of the vehicle are inherited in this. Did you get this point?
Zainab Iftikhar, Aisha, both Aishas. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को. Do you see it's a very good example of inheritance over here? It has automatically picked up the vehicle की क्लास की प्रॉपर्टीज बस के अंदर वो ऑटोमेटिकली आ गई हैं. और इसके द्वारा व्हेन आई प्रिंटेड इट ऑटोमेटिकली वो आपको बता रहे हैं. दैट्स हाउ इट्स वर्किंग. Okay, so this is how create a child class bus. I did that. That will inherit all of the variables and methods of the vehicle class. So it has actually जितने भी variable methods थे आपके vehicle के अंदर वो इसके अंदर inherit हुए हैं कि नहीं हुए? हुए हैं बिल्कुल. Get my point, all of you? Yes or no? मैं इसको भी कॉपी कर देता हूँ. So very good. So, are you with me or not? ये मैं अकेले बोले जा रहा हूँ. आयशा, सारिया. Are you there or not? आयशा मेरे बना सारियां सिर्फ. मेरा आवाज आ रही है? यस. ओके. राइट. सो फाइन. यही है बेटा, प्रैक्टिस करो सारा. एंड इफ यू डोंट एनी क्वेश्चन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो ग्रुप में टू आस्क मी. मैं आपको राइट वे रिप्लाई करता हूँ. आप इसको बैठ के अभी आज ही प्रैक्टिस कर लो वरना आप भूल जाओगे. ठीक है क्लासेस को. ऑब्वियसली बाकी इसके एडवांस लेक्चर पास पेपर वगैरह हम जनवरी में करेंगे क्लासेस और इसके रिमेनिंग पार्ट्स विद फर्दर प्रैक्टिस. ठीक है. मगर वी हैव स्टार्टेड डूइंग क्लासेस एज वेल. हमने काफी डिस्कस कर लिया वैसे. ओके. इफ ऑल दिस इज क्लियर. राइट बेटा? ओके. एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन बेटा? नो. ओके. 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 बाय. नो. ओके बेटा. ओके. अल्लाह हाफिज.